Hello friends, so today we are going to discuss in this session about British poetry, a very special poem written by Andrew Marvell to his coy mistress. Also, it has been requested by many of our subscribers to cover the different blocks of British poetry. So here we are today, we'll explain para-wise this entire poem. So let's get started with it. Before we get started with the poem, it's very important to understand what does the name signifies. To his coy mistress is Andrew Marvell's one of the best known poem. It focuses on the lustful desires of a man attempting to entice a female virgin, the mistress, into sexual intimacy. It's basically a very popular seduction poem. Guys, also there has been a request that I should also cover the lectures in Hindi. So in this today's session, I will also try to cover as much as I can in both English and Hindi simultaneously. दोस्तों ये जो पोएम है टू इस कॉय मिस्ट्रेस जिसके कवि एंड्रयू मार्वल है बेसिकली एक 46 लाइन का एक पोएम है. इससे पहले कि मैं आपको लाइन बाय लाइन उसका मतलब समझाऊँ पूरे पोएम का, I would like to discuss about a particular paragraph that was asked in June 2018. So basically the poem paragraph says, thou by the Indian Ganges side shouldst rubies find, I by the tide of Humber would complain, I would love you 10 years before the flood and you should if you please refuse till the conversion of the Jews. नाउ गाइस, मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया है कि आपको पूरा पोएम याद नहीं करना है. आपको बेसिकली क्या करना है कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स याद रखने हैं, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ. उसका थंबनेल आपको ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा. So let's come to this paragraph. Basically, this paragraph has to be explained in three different categories. I have also explained about these categories, but again, to your knowledge, the first category is reference. You have to say that these lines are taken from Andrew Marvell's To His Coy Mistress. Then comes the context. The context is that Ganga River has been mentioned. Yes, the Ganga River is considered sacred and holy by many people all over the world. नाउ कमेंट जो पोर्शन है दोस्तों, उसमें आपको ये पोएम पैराग्राफ को डिस्क्राइब करना है. सो लेट्स गेट टू द डिस्क्रिप्शन पार्ट which is basically commenting on it. So basically this paragraph is line 5 to 10 out of the 46 lines of the entire poem. Regarding the explanation, as I said, the third category of the answer will be comment. इससे पहले कि मैं इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँ दोस्तों, आप अगर ठीक से इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें कुछ कीवर्ड्स निकल के आते हैं, जैसे कि गंगा रिवर, गंगा नदी के बारे में बात किया गया है. उसके बाद यहाँ पे ऑल्सो बात किया गया है आपके फ्लड के बारे में. जो हम लोग का वो जो फ्लड होता है वो फ्लड नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली एक वेरी बिब्लिकल टर्म है विच आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग मिनट्स. एंड लास्टली अबाउट द कन्वर्शन ऑफ द ज्यूस. The Ganga River is considered sacred and holy by many people all over the world. She could hang out on the bank of the Indian Ganga, finding rubies. In Marvel's time, the Ganga is pure and pristine. Now, many parts of it are incredibly polluted, and he would be across the world at the Humber tidal estuary, skipping in the forth from the waves and whining. This would place them far away from each other. Obviously, the speaker doesn't sound thrilled at the idea of long distance relationship. अब ऑब्वियसली ये पोएम है सेडक्शन के बारे में, सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में. सो ऑब्वियसली द राइटर जो है, जो एंड्रयू मार्वल है, ही डजंट अप्रूव अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स. आराम से समझ में आता है. सो ही वुड गो बैक इन टाइम टू नोआ एंड द फ्लड. अब जो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि फ्लड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू नोआ एंड द फ्लड, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिब्लिकल इवेंट था which actually allowed God to erase the entire humanity from the world. उसके बारे में कभी और बात करेंगे. तो उसके रेफरेंस में लिखा गया है अबाउट द नोआ. अगर आपको उसके बारे में जानना है, कैन ऑल्सो वॉच द मूवी नोआ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे. सो बैक इन टाइम नोआ एंड द फ्लड एंड फॉरवर्ड इन टाइम टू द कन्वर्शन ऑफ द ज्यूस. अब कन्वर्शन ऑफ द ज्यूस के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था, वो अभी टाइम चल भी रहा है, कि व्हेन द क्रिश्चियंस बिलीव दैट द ज्यू शुड बी कन्वर्टेड टू व्हाट, क्रिश्चियंस. ऑब्वियसली क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर्स हैं, दे ऑलवेज वांटेड देयर रिलीजन टू बी सुप्रीम. तो बेसिकली उन लोग का ज्यूस का बहुत पहले से उन लोग का ज्यूस के साथ तालमेल ठीक नहीं था, एंड दे ऑलवेज वांटेड ज्यूस टू बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन. बट एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रिश्चियंस ये भी बिलीव करते हैं कि दे शुड नॉट बी फोर्स्ड. ओके, दे शुड नॉट बी फोर्स्ड, और कोई भी दबाव नहीं डालना चाहिए उन पे कन्वर्शन के लिए. बट ऑब्वियसली there is another segment of Christianity which also believes in giving a subconscious pressure of like finance की बात कर लो या किसी और के बात,
टू ज्यूस को कन्वर्ट करने के लिए, एज यू नो हाउ द entire thing goes on. So the speaker's grand biblical language mocks poems which describes love in divine terms. So this is the video guys. अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आया है then please do like, comment and आपका जो भी और डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि एमएजी पोएट्री को कैसे अप्रोच करें. यस मैंने बताया था कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं क्या करूँगा कि अगली वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा. एंड यस ये हो गया आपका 2018 का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से जो पैराग्राफ आया था लाइन 5 से लाइन 10 तक. If you happen to understand something from the explanation that I've just given, then please share it with your friends and also help them out. As usual, God bless you and thank you all.